Dear students, CBSE board exams are coming close and yes, I know what you are thinking. पेपर आने वाले हैं और हमारी प्रिपरेशन अभी तक स्ट्रांग नहीं है। बट घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज से हम स्मार्ट प्रिपरेशन शुरू करेंगे, वो भी बिल्कुल बिना प्रेशर के, बिना स्ट्रेस के, सिर्फ एक सॉलिड स्ट्रेटेजी के साथ। और स्ट्रेटेजी सिंपल है, एक बार में सिर्फ 5 क्वेश्चन की तैयारी, बस 5 क्वेश्चंस डेली, और धीरे धीरे पूरा सिलेबस हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 5 सुपर क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। नोटबुक ले लो, पेन ले लो और लेट्स बिगिन। Today's topic is life process nutrition. The first question depend on food processing and absorption. Question: a student eats a meal rich in carbohydrate and proteins. A part: explain how the food will be broken down in the alimentary canal. Answer: carbohydrate begin digestion in the mouth by salivary amylase, change to maltose, and are further broken down into glucose in the small intestine by pancreatic amylase and intestinal enzymes. Protein are digested in the stomach by pepsin to peptidase and fully broken down into amino acids in the small intestine by trypsin and peptidases. मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ में सलाइवरी एमाइलेज से और एंड होता है पेनक्रिएटिक एमाइलेज एंड इंटेस्टाइनल एंजाइम से स्मॉल इंटेस्टाइन में। और प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक में with the help of pepsin enzyme and end होता है small intestine में trypsin and peptidase से। Now B part: why is a highly folded structure present inside the small intestine? Small intestine has villi and microvilli that increase the surface area for efficient absorption. Means कि जो हमारा digestion complete हो जाता है small intestine में, उसमें फिर absorption के लिए surface area increase करने के लिए villi and microvilli present होते हैं। Question number 2 depend on photosynthesis efficiency. A potted plant is kept in a dark room for 48 hours and then placed in sunlight for 3 hours. एक potted plant को 48 hours के लिए dark room में अंधेरे कमरे में रखा गया, then उसको 3 hours के लिए sunlight में रखा गया। Question A: why is the plant kept in darkness before the experiment? The answer is the plant is kept in darkness to de-starch it so that new starch formation can be detected. B part: what will happen to the starch test result of a leaf before and after exposure to sunlight? The answer is before sunlight. Leaf will not turn blue-black because no starch is present, because we put the potted plant into the dark room for 48 hours. So all starch is used up. And after sunlight, leaf will turn blue-black showing starch formation. The question number 3 is human digestive enzymes. The question is state the role of bile juice in digestion although it has no enzyme. बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं होता बट फिर भी वो हमारा डाइजेशन में स्पेशल रोल प्ले करता है। द आंसर इज दैट बाइल emulsifies the fats and make the medium alkaline for enzyme action. B. Explain what will happen if the pancreas stops secreting pancreatic juice. Answer is that pancreas secrete the juice that has three enzymes: trypsin, amylase or lipase. That digest the trypsin digests the protein, amylase digests the carbohydrate, and lipase digests the fat. And when pancreas stops secreting pancreatic juice, what will happen? Food will remain undigested, leading to malnutrition. Next question, question number 4. Compare autotrophic and heterotrophic nutrition. And question is, a student claims both plants and humans produce their own energy. Yes, the answer is yes. Both release energy through respiration. But only plants make their own food, humans depend on external food. Yes, we agree this statement. And the B part is compare basic requirement for autotrophic and heterotrophic nutrition. The answer is autotrophic nutrition: carbon dioxide, water, sunlight, and chlorophyll. And requirement of heterotrophic nutrition is ready-made food and enzymes for digestion.
And last question number 5, factors affecting photosynthesis. And the question is, a farmer wants to increase crop yields. A, identify 2 factors affecting photosynthesis. Answer is light intensity and carbon dioxide concentration. And B part, explain how controlling these factors increase productivity. Increase product light and CO2 increase photosynthesis rate, resulting in higher yields. सी प्रेशर बिल्कुल नहीं, बस 5 क्वेश्चन, लेकिन कंसिस्टेंटली। आज का टारगेट कंप्लीट हो गया। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये रूटीन फॉलो किया, बोर्ड एग्जाम आपके लिए केक वॉक हो जाएंगी। इफ यू वांट टू सी more such videos, daily questions and exam tips, like, share and subscribe जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, keep learning, keep growing.